Till the last session, we had completed with structural isomerism part. And today we are going to start with the second type of isomerism, which is stereoisomerism. So first of all, by definition, stereoisomerism is a phenomena in which the compounds have same molecular formula as well as same structural formula. That is why two of the compounds, if given, if they have the same IUPAC name, then we have to think in terms of stereoisomerism. They are the compounds in which the molecules have same molecular formula, same structural formula, but the difference is in the spatial arrangement of atoms or groups. Stereoisomerism is broadly classified into two main types, that is geometrical and optical isomerism. There is a third type also, that is conformational isomerism, which we study in alkanes because of the free rotation of atoms or groups along the carbon to carbon single bond. ठीक है, तो मेनली दो मेन टाइप्स की हम हमेशा बात करेंगे, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिक. Now, geometrical isomerism is also called configurational isomerism. Geometrical is also called configurational isomerism. And this arises due to, now, all this points and details I've given in the handwritten notes on page number 18. You can just refer the details on that page. Okay. Geometrical isomerism arises due to difference in spatial arrangement of atoms or groups about the. Now, the most common geometrical isomerism we had observed is in alkenes. And alkenes mein the GI is possible due to restricted rotation along the carbon to carbon double bond. अब ये restricted rotation का फंडा क्या है? जब हमने कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड की बात की थी, तो we had observed that there is a free rotation possible for the atoms or groups along the single bond, due to which we can have various arrangements in space. Those arrangements for the single bonded carbon in alkanes were called. The free rotation along the carbon to carbon single bond in alkanes results into various arrangements Conformational called isomers. conformations or conformational isomerism. But यही चीज अगर हम डबल बॉन्ड में देखें तो the rotation becomes restricted because of the presence of the pi bond. And because the rotation is restricted, if the substituents on the double bonded carbon are different, they will have different arrangements in space, and those would be called as geometrical isomers. So once again, geometrical isomerism arises due to difference in spatial arrangement of atoms or groups around the carbon to carbon double bond due to restricted rotation. Now, apart from the alkenes, the GI is also possible in alkene ka isomer only, that is cycloalkane. Now, cycloalkane mein, though the carbon atom is joined by single bond, but because of the cyclic arrangement, the rotation around the carbon to carbon single bond in the case of cycloalkane is restricted. मतलब यहाँ पर भी rotation restricted है, तो इसकी दो valency when it is above the plane and below the plane. If the two substituents on adjacent carbon atom are having the arrangement like this, then we can have the cis and trans possible in cycloalkane also. ठीक है? The ring acquires planarity because of the angle being decreased from the tetrahedral angle, and the two substituents can lie above and below the plane, resulting into different arrangements, that is cis and trans. Now, apart from this two, the GI is also possible in the unsaturated compound
wherein the carbon and nitrogen is joined by a double bond. So this particular functional group is called as oximes. C double bond N, and specifically जब N पे OH रहता है तो it is called oximes. और जब OH नहीं हो then it is generally called as imines. Carbon double bond N is called oxime or imine, and because of the restricted rotation around the CN bond, this can also show the GI. And likewise, this GI is also possible in nitrogen-nitrogen double bond. अब ऑब्जर्व करो, in the case of oxime amines and the azo compounds, जो कि मैं लिख रहा हूँ azo compounds, there is also a lone pair. So here, instead of the atom or the group, the lone pair का arrangement will decide the cis and trans. ठीक है, जैसे यहाँ पर we have 1 2 3 and 4 substituents. यहाँ पर हमारे पास तीन ही रहेंगे and the fourth will always be a lone pair. यहाँ पर दो ही रहेंगे and the other two will be the lone pairs. Understood? So first thing, geometrical isomerism is possible in alkenes, cycloalkanes, oxime or imines, and the azo compounds. And for the GI to be possible, there is a note given. Both the atoms of double bond or single bond in cycloalkane should contain different substituents, and the molecule must be planar. तो ये चारों molecule planar तो है, and the GI possibility would be based on the substituents. So if on this double bonded carbon I have A and B, and on this double bonded carbon again I have A and B, then double bonded carbon पे ये दोनों substituent एक दूसरे से differ करने चाहिए. अगर यहाँ पर A and A type का substituent होगा तो फिर it will not show the GI. Correct? So it should have different substituents on the double bonded atom or single bond in case of cycloalkanes. Is this introduction clear, everyone? Please respond. Yes, sir. Okay. Now moving to the examples. The first example, which is the simplest one जो strike होता है, that is butene का, and उसमें भी but2ene का, जहाँ पर in the case of butane, if the hydrogen atoms are lying on the same side, then it is called Cis. cis isomer, cis butane. And if the two hydrogen atoms are lying on the opposite side of the double bond, it will be called as the trans isomer. So if you observe, both these compounds have the same IUPAC name, but the arrangement of atom or group is different. Hence, they are stereoisomers. Usme bhi it is geometrical isomer. Up few important points to be discussed. First point, stability. Which is more stable? Cis Trans. and trans में which is more stable? Of course, trans. Because cis के case में, because the substituents are lying on the same side, there will be steric repulsions among them. But इस case में the groups are on the opposite side, the steric repulsion is minimized, and that is why this particular isomer, yani trans, will be more stable as compared to the cis isomer. So this is the first type of question which could be asked. Given the cis and trans, the stability is more for the trans due to lower steric repulsions. Second, polarity. Which is more polar? Cis. Cis. Now the polarity could be understood by the concept of dipole moment. So dipole moment is a vector quantity to identify polarity of a molecule, and it is measured as a product of Charge into distance. charge into distance. So if I have a single bond between A and B differing in their electronegativities, where A is less electronegative, so plus, and B is more electronegative, minus. So charge multiplied by the bond length or the distance gives you the dipole moment.
and it's indicated by a vector quantity which is indicated by an arrow from the less electronegative to a more electronegative atom like this. That's the theory part about dipole moment. So now, in case of methyl and the double bonded carbon, which is more electronegative? Double bonded carbon. Double bonded carbon. So here the concept is based on electronegativity dependent on percentage of S character. S character. तो sp कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, followed by sp2 and then sp3. That's for the carbon atoms. मतलब ऑर्गेनिक में हमेशा ये ऑर्डर ऐसा ही रहेगा. So between single bonded and the double bonded carbon, the dipole is more for the double bonded carbon. Similarly, यहाँ पर भी इस तरह से. Now looking at the two vectors, what will happen to them? Add. They will get added up. So the net dipole moment will be higher. But the same thing if I apply over here, look at the dipole directions. They will Cancel. cancel each other. And the mu for this or the dipole moment would be 0, making the trans to be non-polar. Correct. So in general, cis molecules are more polar and trans molecules are less polar. Next point, boiling point, which will be higher. Trans. Trans. No. Now, if I talk about a polar versus a non-polar molecule, which is going to have a higher boiling point? Polar. Because polar molecules will have dp-dp attractions, dipole-dipole, and non-polar में weak van der Waals होगा. So the moment I ask about boiling point as a property, you always remember that it is dependent on intermolecular forces of attraction. जितना stronger intermolecular forces रहेगा, उतना higher boiling point रहेगा. So obviously, a molecule which is more polar will be having a high boiling point. Yes or no? Yes, sir. And the trans will have a low boiling point. So the boiling point is decided on the basis of dipole moment, where we observed that cis had a high dipole moment, making it more polar, and this trans had a low dipole moment, making it less polar. ठीक है. अब melting point. Now boiling point is dependent on intermolecular forces of attraction. But melting point is a property to convert solid into liquid. It is dependent on the packing present in the solids. तो solids के अंदर जो constituent species है, atom या molecule जो भी हो, जितना ज़्यादा closely packed रहेगा, उतना the solid would be hard, and harder the solid, higher will be its melting point. So here, for the melting point, we have to check the packing in solids. And this packing as a property is dependent on symmetry associated with the molecule. जितना कोई भी atom या molecule ज़्यादा symmetrical होगा, उतना close packing होगा, and उतना the melting point would be higher. Now have a look at this. This one is the cis isomer of butane. You can see the two methyl groups lying on the same side. And this one is the trans isomer. If we look at the cis, then there is one plane which will break the molecule into two equal parts, matlab gives a symmetry. But trans के case में आप देखो, there are two lines which can give you the symmetry associated with the molecule. Matlab, there is one element of symmetry in cis, but there are two elements of symmetry in trans. So a molecule having more elements of symmetry will be more symmetrical as compared to the other. So look at this. Trans butane has more symmetry than its cis isomer, which results in better packing.
एंड बेटर पैकिंग होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा. क्लियर? Yes, sir. Hello. So remember that cis, because of more polarity, stronger intermolecular forces of attraction, has a higher boiling point, but because of lesser elements of symmetry, has a low melting point. And trans has a high melting point because of more elements of symmetry due to closer packing. समझा? Clear? Yes, sir. So overall, with regards to cis and trans, when we talk about the substituents being same on the same side or opposite side, a cis molecule or the cis isomer is always less stable, more polar, having a high boiling point and a low melting point. But ध्यान रहे कि जब कोई substituents differ करेगा, मतलब along this double bonded carbon, let's say I have two hydrogen atom, but बाकी दोनों केस में I have a chlorine and a methyl group. This is the cis isomer, and if the chlorine and methyl are on the opposite side, it will be the trans. ठीक है? अब इस केस में if I ask you the polarity, then once again you have to identify with the dipole moments. So between carbon and chlorine, which is more electronegative? Chlorine. Chlorine. So dipole will be indicated towards chlorine, and double bond carbon or single bonded with double bond. So what will happen to this? As per the vectors, Cancel. cancel. Will they completely cancel each other? No. Of course not, because इसके magnitude differ करेंगे. मतलब cancellation होगा तो dipole moment कम हो जाएगा. And इस case में towards chlorine atom and towards the double bonded carbon. Look at the two vectors. They are adding each other. Hence, the net dipole moment for the trans isomer is found to be More. more than the cis isomer. समझा? मतलब इस केस में trans has a high dipole moment, is more polar, and now the boiling point of this isomer would be higher. तो ये जो मैंने यहाँ पर लिस्ट किया है, ये properties valid है अगर substituents on the double bonded carbon atom on the same side is same. बट अगर अलग हो जाएगा तो खाली dipoles indicate करके you can understand which will be more polar and which will have a higher boiling point. With regards to symmetry aspect, it is not going to change. Here also the trans is going to have a high melting point. मतलब इस example में the trans will have a high BP and high MP both. Got it? बोलो. Yes, sir. Next, let's say about the double bonded carbon atom, I have hydrogen and a functional group like carboxylic acid. So this will be the cis isomer of unsaturated dicarboxylic acid. And if the COH groups are lying on the opposite side, it will be a trans isomer. So now this cis and trans for unsaturated dicarboxylic acid is given a name. It's called malic acid, and fumaric acid. Remember the names, important hai. Malic and fumaric. So बहुत बार they just ask malic and fumaric acid are. What is the relation between them? So the relation will be they are Geometric isomers. geometric isomers. So that is one type of question you can get. ठीक है. अब यहाँ पर malic acid, it is found that when it is heated to a temperature of 423 Kelvin, because the carboxyl groups are lying on the same side, there is a loss of water which can happen. So this will dehydrate, and जब acid dehydrate होता है तो it forms its anhydride. And the anhydride formula is CO, CO,
shared by oxygen, which will be named as malic anhydride. But ये same चीज अगर fumaric acid में try करो heated to 423 Kelvin or even higher than that, then since the COH groups are lying on the opposite side, there is no way the H2O removal is possible, and that is why fumaric acid में there is no anhydride formation possible. So malic and fumaric can be distinguished on the basis of their anhydride formation. So this becomes a distinguishing test. Understood. Yes, sir. Okay. So in the notes also you can observe the page number 19. I have given the various examples. जिसके अंदर I have discussed about the polarity, dipole moment, boiling point, melting point, stability, everything I have discussed. Just this example you can write on page 19 top, and you can mark it as an exception. मतलब सिस और ट्रांस में जब हम डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं तो हमेशा सिस का ज्यादा है ऐसा जरूरी नहीं है. अगर सब्स्टिट्यूएंट सेम होंगे तो फिर दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज वैलिड. Otherwise, if the substituent is different, you just identify it with the dipole moments. Make a note of this on page 19 top. Okay. Next, on the next page, एक reaction दिया हुआ है which we had discussed in the theory also, which was related to conversion of a triple bond carbon into a double bonded carbon. So to convert an alkyne into alkene, we need to do hydrogenation. But if we do the hydrogenation in presence of Raney-Nickel, what would be the product? Alkane. Alkane. Because Raney-Nickel में complete hydrogenation होता है जो triple bond को single bond में convert करेगा and it will result into formation of an alkane. But if I do the controlled hydrogenation, then it's possible to convert an alkyne into alkene. For that, we use the concept of poisoning of catalyst. So if I do the hydrogen addition in the presence of palladium poisoned with barium sulfate mixed with xylene or quinoline, then what happens? The addition of hydrogen is controlled and the two hydrogen now adds to give an alkene. But when the palladium barium sulfate is used as a catalyst, the hydrogen are added from the same side of the triple bond. So addition of the atoms from the same side is called syn addition. क्या बोलते हैं? Syn addition. And if the hydrogen atoms get added from the same side, then it will result into formation of a hydrogen added from the same side will result into Cis-butene. formation of a cis isomer, that is cis-butene. And this catalyst through which the alkyne is converted into cis-alkene is known as Lindlar's catalyst. Is known as Lindlar's catalyst. ठीक है, तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए. First is partial hydrogenation by the Lindlar's catalyst results into cis-alkene. Second is the reason for the cis-alkene formation is the hydrogen atoms when they get added they add from the same side. मतलब कुछ ऐसा ऐड होगा इसलिए वो cis isomer बनेगा. अब the other reagents through which the same conversion can happen is
hydrogen with palladium, cal- calcium carbonate, or we can do this reaction in the presence of a hydride of boron, that is diborane, or in the presence of nickel boride, which is also called P2 catalyst. Okay, so it's named as P2 catalyst. ये commercial name है nickel boride का, जो partial hydrogenation करने के लिए use होता है, और the product over here is a cis isomer. But if the same conversion is done by using sodium in liquid ammonia, which is a blue colored solution, or liquid, sorry, lithium in liquid ammonia, or the stronger hydride of LiAlH4, then the hydrogen are added in such a way that the two hydrogen get added from the opposite side. और अब जब opposite side से addition होगा, it will result into formation of a Transbutane. transbutane. And this type of addition would be called anti-addition. Syn मतलब addition from the same side, anti मतलब addition from the opposite side. नाम में ही मतलब है, ठीक है? And this sodium in liquid ammonia वाला reduction is called as Birch reduction. Is called as Birch reduction. So the mnemonic which I had given for this was Birch gives you trans and Lindlar give you cis. Birch gives you trans, Lindlas gives you cis. So BTLC के through you can just remember the whole concept in a simpler manner. Conversion of alkyne into a cis alkene and conversion of alkyne into a trans alkene via syn and anti addition results into a cis and a trans isomer. The names given are Birch and Lindlar's reduction. Clear? Yes, sir. So this entire part is given at the bottom of page number 20. Exactly same manner में दिया हुआ है. Syn, anti, Lindlar's and Birch, and to be remembered as PTLC. Now, moving to the cycloalkane isomers. So as we discussed, apart from alkene, उसका जो ring chain isomer है cycloalkane में भी GI possible होता है. So if I talk about the simplest of the cycloalkane, it is cyclopropane. And for the GI to be possible, the two substituents on the adjacent carbon atom have to be on the same side or on the opposite side. अब तीन कार्बन में दो ही टाइप का आइसोमर्स हो सकता है, which is 1,2 disubstituted. 1,2 disubstituted. मतलब on the first carbon, let's say I have H with Me and दूसरे में भी H with Me. So this is cis isomer. और अब अगर एक तरफ से if I interchange the substituents, then this will be trans. This is a 1,2 disubstituted cyclopropane which have cis and trans. Likewise, if I have a cyclobutane, what position isomers I can have for a disubstituted cyclobutane on adjacent carbon? वन टू वन थ्री एडजेसेंट बोला तो 1,2 हो सकता है और 1,3 भी हो सकता है, वो भी डाई सब्सटीट्यूटेड है. उसमें भी द सब्सटीट्यूएंट्स कैन बी प्रेजेंट अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन रिजल्टिंग इनटू सिस आइसोमर्स. मतलब साइक्लोब्यूटेन में डाई सब्सटीट्यूटेड में आई कैन हैव 1,2 एंड 1,3, जिसके सिस एंड ट्रांस होंगे तो टोटली 4 आइसोमर्स बनेंगे. सेम वे में इफ आई टॉक अबाउट साइक्लोपेंटेन, what position isomers are possible? 1,2, 1,3. 1,2 and 1,3 only, because 1,4 will be identical to 1,3 and 1,5 will be identical to 1,2. तो यहाँ पर भी हमारे पास 1,2 and 1,3 ही possible होगा. Clear? Yes, sir.
सो साइक्लोप्रोपेन में सिर्फ एक ही पोजीशन आइसोमर के लिए GI पॉसिबल होगा, बट साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोपेंटेन में there will be two of the position isomers wherein we can have the GI possible. And now importantly we move to the next one, that is cyclohexane. इसमें what possibilities are there? 1 2 1 3 1 4. 1 2 1 3 and 1 4. ठीक है, तो इसमें 3 पोजीशन आइसोमर्स होंगे जहां पर द GI कुड बी पॉसिबल, बट इट ठीक है. अब इफ आई टॉक अबाउट अ डाई सब्स्टिट्यूटेड, लेट्स से डाई मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन, तो उसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स अगर पूछा जाए तो कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे? 4. डाई सब्स्टिट्यूटेड 4. So what is missing in this? 1 1. 1 1. तो 1 1 भी होगा एज अ स्ट्रक्चरल आइसोमर, बट 1 1 वाला जो है, बिकॉज द सब्स्टिट्यूएंट्स आर सेम ऑन द कार्बन एटम, दिस वोंट शो GI. 1 1 के केस में GI पॉसिबल नहीं होगा. मतलब स्ट्रक्चरल 4 होंगे बट ज्योमेट्रिकल इसके 6 होंगे. समझा? Yes, sir. एंड टोटल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे? 7. 7. 1 + 2 + 2 + 2, that is 7. समझा? तो एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया. डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन होगा तो उसका स्ट्रक्चरल होगा 4, ज्योमेट्रिकल होगा 6 और टोटल होगा 7. करेक्ट. बोलो. Yes, sir. नाउ the problem with the cycloalkane isomers is the strain present in the ring. Now strain का मतलब क्या है? If I talk about this carbon atom present in cycloalkane, what is the hybridization? What is the hybridization of single bonded carbon in a cycloalkane? sp3. sp3. कार्बन सिंगल बॉन्डेड है तो sp3 ही है. तो sp3 के बेसिस पे इसका जो एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल है वो कितना होना चाहिए? 109.5. 109.5 degree. But if I talk about the observed angle between the two bonds over here, how much is this? It's an equilateral triangle type. 60. 60. मतलब जो दो बॉन्ड्स के बीच में एंगल 109.5 होना चाहिए, that is now shrink to a very lesser angle of 60 degree. So these two bonds would have electronic repulsions in that, and because of the electronic repulsion the ring will be highly unstable. It will be always under tension. This is called ring tension or ring strain. So because of the strain, these cyclic isomers are unstable and they always try to open up. ठीक है. Similarly, cyclobutane में भी observed angle 90 है और cyclopentane में observed angle कितना होगा? How much is this? 108. 108 degree. Now this 108 is very closer to the expected angle. That is why cyclopentane as a cyclic isomer of cycloalkane is stable. मतलब 3 and 4 membered rings are generally unstable. 5 and 6 membered rings are stable. 6 membered ring में आप सोचोगे कि ये जो एंगल है ये तो 120 डिग्री है, which is more than the expected angle. बट ये जो हम थियोरेटिकल साइक्लोहेक्सेन ड्रॉ करते हैं, प्रैक्टिकली इन द 3 डायमेंशन द साइक्लोहेक्सेन डजंट एग्जिस्ट लाइक दिस. In fact, it arranges itself in a conformation
in which the bonds are arranged in the form of a chair. तो ये सेम साइक्लोहेक्सेन है जिसके 6 कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड लाइक दिस, जो कि एक चेयर की तरह दिखता है. Correct? So this is called as the chair conformation. And the 6 carbon atom arranges like this because now the angle between the bonds, if observed, it is exactly 109.5 degree, and this is the most stable arrangement of the cyclohexane. समझा? बाकी साइक्लिक आइसोमर्स भी कुछ कॉन्फॉर्मेशन में अरेंज होता है, लेकिन साइक्लोहेक्सेन का सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए आई विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल फॉर साइक्लोहेक्सेन. So this is the chair conformation which I discussed. Now, for every carbon atom of the cyclohexane, there are two bonds. बाकी दो bonds जो है, they will be arranged like this. एक जो है वो above the plane होगा and दूसरा will be below the plane. But because they are not exactly 90 degree to each other, एक जो है वो अगर ऊपर की तरफ होगा तो this is called as a axial position, and जो नीचे की तरफ जा रहा है at an angle of 109.5 degree, this will be called as equatorial position. समझ में आया? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. See, theoretically हम अगर साइक्लोहेक्सेन ड्रॉ करें तो ये गलत स्ट्रक्चर है, बट जस्ट कन्वीनियंस के लिए हम ऐसा ड्रॉ करते हैं. दूसरी बात, कन्वीनियंस के लिए हम ऊपर और नीचे की बात करते हैं, और ये एग्जैक्टली ऐसा 90 डिग्री दिखाते हैं, बट ऐसा होता नहीं है. आई होप दिस इज अंडरस्टूड नाउ. So if I show an isomer like this, उसमें this H and the methyl will be at the axial and the equatorial position. Even for the next carbon, it will be at the axial and equatorial position, which will be arranged like this. So the blue lines are axial position and the inclined one is the equatorial green lines, which is observed here. Understood? Yes, sir. अब ध्यान से सुनना. If I talk about the first carbon, let's say this as my second carbon and this as the third carbon. ये first के हिसाब से, अच्छा fifth ले लेते हैं, ठीक है. So when the three bonds are at the axial position, this three will always have the steric repulsions. जब भी 1, 2 and 5 पे कोई axial bonds present होंगे, so it will always have the electronic repulsions, steric repulsions, which will make the cyclohexane का arrangement unstable. That is why it is always preferred and observed that if the substituents are at equatorial position, it will impart more stability to the molecule. So अगर दो substituents adjacent या alternate carbon पे हो या opposite पे हो, equatorial ones are always imparting more stability, because the axial will always have the steric repulsions which will destabilize the molecule. समझा? बोलो. Yes, sir. Now, if I talk about first and second carbon, let's say यहाँ से देखते हैं, ये first है तो ये second ले लूं, चलेगा ना? बोलो. Yes, sir. हाँ. तो अब adjacent carbon पे look at the two substituents if I attach. First में it is above and second में it is below. What type of arrangement can you name this? Cis or trans? Trans. Of course it will be trans. And to be more specific, I can say this is trans axial axial. ठीक है. वैसे ही अगर दो सब्सटीट्यूएंट इक्वेटोरियल पे है, तो वन इक्वेटोरियल इज गोइंग डाउन साइड एंड अदर इक्वेटोरियल इज गोइंग अप साइड. मतलब द ट्रांस कैन आल्सो हैव एन अरेंजमेंट व्हिच इज इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल ई.
So how can And equatorial be going up and down? see, this equatorial is not something which is present in the same plane. मैंने जैसे बोला they are inclined at an angle of 109.5 degree. तो अगर ये वाला एक्चुअल हम लोग परपेंडिकुलर लेते हैं तो इसका जो इक्वेटोरियल है दैट विल बी लाइक दिस. ये अगर डाउन साइड लेते हैं तो इसका इक्वेटोरियल ऊपर की तरफ जाएगा. अंडरस्टूड? Yes, sir. दे आर नॉट इन द सेम प्लेन. इसलिए देखो इसके लाइंस आप देखोगे तो नीचे और ऊपर की तरफ जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट एंगल ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट्स. समझा? Yes, sir. मतलब for 1 2 I can have the two substituents, let's say methyl, arranged like this, giving you a trans-axial arrangement, or similarly it can have the two methyl groups arranged like this, which can be trans-equatorial. तो अब इसका जो cis isomer होगा that will be one axial and one equatorial. मतलब एक पे axial होगा और second पे equatorial होगा. That will be a cis isomer for a 1,2 disubstituted cyclohexane. ठीक है. अब जैसे मैंने बोला कि if two substituents are on the equatorial position, it imparts maximum stability to the molecule. So out of the three arrangements, which is going to be max stable? Trans EE. Trans equatorial, equatorial. This is for 1,2 disubstituted. ठीक है. अब मुझे बताओ 1 3 अगर मैं बात करूं, लेट्स से दिस इज फर्स्ट सेकेंड और ये मेरा थर्ड कार्बन हो गया. व्हाट डू यू ऑब्जर्व नाउ? 1 and 3 पे अगर मैं दो सब्स्टिट्यूएंट रखूं तो किस टाइप का अरेंजमेंट दे रहा है? Cis AA. दिस एक्शियल एक्शियल. तो सिमिलरली अगर मैंने दोनों इक्वेटोरियल पे प्लेस किया तो भी Cis. दिस होगा. And now the trans would be one axial and one equatorial. Correct. अब इनमें बोलो which will be the max stable isomer. Cis EE. Cis equatorial, equatorial. ध्यान रखना for cycloalkane isomers, the two substituents on the equatorial position impart maximum stability because the electronic repulsion is minimum in those cases. तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां पर cis becomes more stable than the trans because of the arrangement of the substituents at the equatorial position for a cis isomer. और अब अगर मैं 1 4 की बात करूं तो 1 2 3 एंड लेट्स से दिस इज द फोर्थ वन. टेल मी कैसा अरेंजमेंट दिख रहा है? Trans AA. एंड इट्स एग्जैक्टली सिमिलर टू 1 2. 1 2. तो इसमें तो कोई और डिफरेंस ही नहीं है. ट्रांस एक्शियल एक्शियल होगा एंड ट्रांस इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल भी होगा. मतलब ये फर्स्ट पे देखो इक्वेटोरियल, ये फोर्थ पे इक्वेटोरियल. ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है एंड द distance between them is very very large, and that is why the electronic repulsions will be minimum and the stability will be maximum. So finally concluding, the trans is more stable for 1 4. समझा? Yes, sir. Okay. Now जो cis and trans है, they can also have the OI possible. If you remember, in the coordination isomerism, we talked about structural, then stereo में भी we talked about GI first, and GI के बाद we talked about OI. Correct? Yes, sir. Yes, sir. तो cyclohexane में भी मैंने structural बात किया, stereo में GI का बात किया, और अब OI की बात करते हैं. ठीक है. Now इस केस में depending on the presence or absence of the symmetry and the non-superimposable mirror images,
it is observed that 1,2 का trans and 1,4 का cis show optical activity, meaning optical isomerism. यानी जो 1,2 का ट्रांस इक्वेटोरियल है और 1,4 का सिस एक्सियल इक्वेटोरियल है, because of absence of the symmetry and non-superimposable mirror images, this particular isomers are found to be optically active. बाकी सारे जो है optically inactive होते हैं. अब इसका सिमेट्री और वो सब डायग्रामेटिक एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू एक्सप्लेन दैट. सो अब जस्ट ये याद रखो दैट इन द साइक्लोहेक्सेन देयर आर 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स 1,1, 1,2, 1,3, 1,4. 1,1 can't show any stereoisomerism. 1,2, 1,3, 1,4 GI बताते हैं, और उनमें भी 1,2 का ट्रांस एंड 1,4 का सिस shows the OI. That's it. ये तीन चीजें याद रखना है, स्ट्रक्चरल, GI एंड OI. 1,2 का ट्रांस एंड 1,4 का सिस shows optical isomerism. 1,2 का ट्रांस, 1,4 का सिस. तो जब आप 1,2 का ट्रांस देखोगे तो उसमें कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होती है. सेम वे में 1,4 का सिस. ठीक है, तो जो स्टार मार्क किया है वो ही OI बताता है, बाकी कोई भी इन आइसोमर्स में OI नहीं बताते हैं. अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके, नाउ लुक एट पेज नंबर 20. एक नोट दिया हुआ है वहां पर. पॉइंट, in case of open chain, trans is more stable than cis. That's what we have observed generally. But in case of cyclo, cis is more stable than trans. अब साइक्लो में हर बार ऐसा नहीं होता है. वहां पर साइक्लो की जगह आप लिखो 1,3 साइक्लोहेक्सेन. In case of 1,3 cyclohexane, cis is more stable than trans. Done? Yes, sir. एंड पेज 21 पे नोट के ऊपर देखो, सिस 1,4 और ट्रांस 1,4 दिया हुआ है साइक्लोहेक्सेन का. उसमें सिस के नीचे लिखा है मोर स्टेबल एंड ट्रांस के नीचे लेस स्टेबल. वो उल्टा होना चाहिए, दैट्स अ करेक्शन. सिस विल बी लेस स्टेबल बिकॉज 1,4 के केस में ट्रांस ही ज्यादा स्टेबल होता है. तो मोर और लेस को इंटरचेंज कर दो प्लीज. But this is the correction on page 21. Fine. Sir, can you repeat? On page 21, just above the note वाला part, more stable and less stable bracket में दिया हुआ है. Yes, sir. Just interchange that. Because in 1,4, cis is less stable and trans is more stable because of the EE arrangement. Okay. Yes, sir. So this is how the actual arrangement of a di-substituted cyclohexane looks like. ये just आपके reference के लिए है. When I talk about 1,2, it can be cis axial equatorial. अब चाहे 1 पे एक्शियल रखो, 2 पे इक्वेटोरियल, या 1 पे इक्वेटोरियल, 2 पे एक्शियल, दिस टू आर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स. इसलिए मैंने सिस का यहाँ पर एक ही अरेंजमेंट लिखा. चाहे वो AE लिखो या EA लिखो, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज. गॉट इट? और ट्रांस के केस में दिस इज 1, 2 इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, एंड दिस इज 1, 2 एक्शियल एक्शियल. तो क्लियरली आप देख सकते हो कि ये जो इक्वेटोरियल का अरेंजमेंट है दैट इम्पार्ट्स मैक्सिमम स्टेबिलिटी, एंड दैट्स व्हाई 1, 2 के केस में
Trans is more stable than cis. उसमें भी I can specifically write trans equatorial is more stable than the cis which has axial and equatorial. समझा? Yes, sir. Yes, sir. तो सिंपली पुट इन वर्ड्स, जो एक्शियल पोजीशन पे बल्कि सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जैसे मिथाइल वाले अगर मैंने एक्शियल पे रख दिया, तो इट विल ऑलवेज हैव द स्टेरिक रिपल्शंस व्हिच विल मेक द मॉलिक्यूल लेस स्टेबल. दैट्स व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. दैट्स इट. Then 2 points given on page 21. A pair of geometric isomers are simultaneously a pair of diastereomers. Now, diastereomers are those isomers which are not the mirror images of each other. कोई भी दो isomers जो एक दूसरे के mirror images ही नहीं हो, they would be called as diastereomers. Now, if I talk about any cis and trans, ये वाला, ठीक है, are they the mirror images? इन दोनों में अगर पूछा जाए कि सिस एंड ट्रांस एक दूसरे के क्या है, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स तो है ही, लेकिन दे आर ऑल्सो डाइस्टीरियोमर्स ऑफ ईच अदर. अब ये वर्ड इंपॉर्टेंट क्यों है, दैट आई विल एक्सप्लेन यू इन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. Remember, the pair of geometric isomers are also simultaneously a pair of diastereomers, meaning not the mirror images. Secondly, the cis and trans can be separated by fractional distillation because they differ in their Boiling points. boiling points. तो fractional distillation के through cis and trans को separate कर सकते हैं. Next, as we discussed, the GI is possible in alkene, cycloalkane, oximes, and azo compounds. Here we come to the oximes. तो oxime is specifically C double bond N के साथ OH. This is an oxime. अब ये दो substituents मैं कुछ भी arrange कर सकता हूँ. Let's say I arrange it as phenyl and H, and one of the substituent here is a lone pair. Now, for such type of compounds, we can't apply the nomenclature of cis and trans. क्योंकि cis and trans को apply करने के लिए जो दो substituents हम देखते हैं, they should be same. But यहाँ पर ऐसा arrangement नहीं दिख रहा है. So the compounds in which there is a lone pair and the substituents are different, we have one more nomenclature for GI called syn and anti. So in case of oximes, you look at the H and the OH. How do you observe? कैसा arrangement है? Side. So it is as good as similar to cis, but cis ना बोल के यहाँ पर इसको syn बोलते हैं. And the name of this oxime is benzaldehyde का oxime, shortly benzyl doxime. Similarly, अगर इस oxime में I have the OH on the opposite side of the H, then it is as good as a trans isomer, but trans ना बोलकर एक नया नाम दे दिया anti benzyl doxime. समझा? बोलो. Yes, sir. So, but where did benzaldehyde come from? See, these oxime compounds are derived from the benzaldehyde C6H5CH double bond O plus H2NOH. का जब reaction हो रहा है ना, condensation होकर, you get this oxime compound. So since it is a derivative of benzaldehyde, it is called benzaldehyde का oxime. ये हम aldehyde ketones में reaction के time पढ़ेंगे. समझा? Yes, sir. ठीक है. तो जब मैं ये वाला रिएक्शन बताऊंगा, तो सामने जो बनने वाला प्रोडक्ट है, अगर मैंने पूछा कि कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो देयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन टेल मी दैट इट विल फॉर्म अ सिन एंड अ एंटी geometric isomers. That's what is important for understanding isomerism from the start. क्योंकि जब हम केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे होंगे तो तुरंत ऑक्साइम से स्ट्राइक होना चाहिए कि हाँ,
यहाँ तो GI पॉसिबल होते हैं. Getting it? Yes, sir. Next, C डबल बॉन्ड N के साथ I have the OH group. अब यहाँ पर OH और लोन पेयर नाइट्रोजन पे फिक्स है. What is not fixed is this two substituents. So let's say these two substituents are now methyl and ethyl. अब जब H था तो H और OH को कंपेयर किया तो हमने सिन लिख दिया और एंटी लिख दिया. बट जब H ना हो तो उस केस में बेस्ड ऑन द नॉमेनक्लेचर वी असाइन द सिन एंड एंटी. तो OH is on the same side of which alkyl group? Methyl. Right. So we call it as syn methyl ethyl कीटोक्साइन, क्योंकि ये कीटोन का डेरिवेटिव है. सिन मिथाइल इथाइल कीटोक्साइन. वैसे ही अगर मैं इस मिथाइल को इंटरचेंज कर दूं तो नाउ द मिथाइल एंड द OH ग्रुप विल बी लाइंग ऑन द ऑपोजिट साइड. समझा? तो आप नीचे अगर नोट देखोगे ना तो यू विल अंडरस्टैंड दैट द अल्काइल ग्रुप विच इज साइटेड विथ रिस्पेक्ट टू द नेम, on the basis of that we have the syn and anti. मतलब अगर sin methyl लिखा तो methyl and OH should be on the same side. Anti methyl लिखा तो methyl and the OH should be on the same side. Got it? Understood? Yes, So sir. तो ये छोटा सा नॉमेनक्लेचर है. अगर ऑक्साइड्स में H है तो H और OH को देखना है. अल्काइल ग्रुप्स अगर होंगे विच आर डिफरेंट देन सिन के साथ कौन सा अल्काइल पहले आता है उसके बेसिस पे OH के सेम साइड पे उस अल्काइल को अरेंज कर दो. यस. एनी डाउट? So syn methyl ethyl ketoxam is the same as anti ethyl methyl ketoxam, right? यस. यस. अगर आप एंटी इथाइल मिथाइल कीटोक्साइम लिखोगे तो भी यही स्ट्रक्चर आएगा क्योंकि एंटी के साथ इथाइल पहले आ रहा है. परफेक्ट. 100% करेक्ट. अंडरस्टूड? Yes. और अजो कंपाउंड तो सिंपल है क्योंकि अजो में नाइट्रोजन के दोनों नाइट्रोजन के ऊपर एक एक सब्स्टिट्यूएंट है एंड बोथ ऑफ देम हैव द लोन पेयर. Here if the two lone pairs are on the same side it is syn. If the two lone pairs are on the opposite side it is as good as trans but called as anti. अब यहाँ पर कोई भी ग्रुप्स हो सकते हैं. कॉमनली अजो कंपाउंड्स में फिनाइल ग्रुप अटैच्ड होते हैं एंड दिस कंपाउंड्स आर कॉल्ड अजो विथ बेंजीन. तो ये सिन अजो बेंजीन हो गया और ये एंटी अजो बेंजीन हो गया with the phenyl group attached to it. Clear? बोलो. yes, sir. सो अल्कीन एंड साइक्लोअल्केन के ऊपर नॉर्मली क्वेश्चन ज्यादा आते हैं. ऑक्साइम्स और अजो कंपाउंड्स बहुत कम आते हैं. बट जस्ट ये सिन एंटी का नॉमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस करना था इसलिए मैंने दोनों कंपाउंड्स आपको बता दिए. ठीक है. अब यहाँ पर कमिंग टू द नेक्स्ट एंड द थर्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर. सिस ट्रांस हो गया, सिन एंटी हो गया. अब आते हैं तीसरे पे EZ. अब इसकी जरूरत क्या पड़ी? If I have a double bonded carbon and all the four substituents are different, let's say chloro, bromo, fluoro, iodo, can you assign cis, trans or syn anti in such a compound? No. Not possible. क्योंकि cis trans होने के लिए दो substituent on the same side of the double bond या opposite side same होने चाहिए. और सिन एंटी के लिए लोन पेयर वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है. तो ऐसे कंपाउंड के लिए टू असाइन द geometric isomerism nomenclature we have E and Z. Now this is based on atomic number rule. ये लिख लो चाहो तो, based on atomic number rule. मतलब क्या? Simply on the double bonded carbon
जो दो ग्रुप्स हैं उनके एटॉमिक नंबर्स को लिखो. व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन? 17. ब्रोमीन प्लस 18 करो, 35. 35. बराबर. So based on atomic number, the one which has higher atomic number is given a higher priority. मतलब अगर मुझे इसको 1 2 नंबर देना है तो एटॉमिक नंबर ज्यादा 1 और एटॉमिक नंबर कम 2. सेम चीज यहाँ पर भी करो. एटॉमिक नंबर 9 एंड 53 है. दिस इज 1 एंड दिस इज 2. ठीक है. अब 1 एंड 1 को देखो. इफ दे आर ऑन द सेम साइड इट इज सिमिलर टू Cis. Cis or sin. सिस और सिन. तो अब सिस सिन की जगह यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस करेंगे जेड. जेड इज डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड जिस्मिन which means together, as good as cis, मतलब equivalent to cis. And E is derived from a word antigenin, antigenin, and this means opposite, as good as trans. मतलब इस केस में the two priorities if they are on the same side it is Z. Z and on the opposite side it will be E. तो ये अपना हो गया Z फॉर्म. ठीक है. ये भी इतना डिटेल में नहीं है सिलेबस के लिए, बट जस्ट अगर इन केस एक्सट्रीम सिनेरियो में आ गया तो यू शुड बी नोइंग दिस पार्ट, इसलिए मैं बता रहा हूँ. आगे, if I have let's say a double bonded carbon and all the four groups are different, which is cyanide, OH, CH2, CH3 and COH. Third example on page 24. Now once again, on the left side of the double bond, assign the priority and that is based on atomic number. किसका एटॉमिक नंबर? द वन विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू डबल बॉन्डेड कार्बन. यानी सिर्फ इसका देखोगे. कार्बन इज 6, ऑक्सीजन इज 8. obviously 1 goes to oxygen, 2 goes to carbon. Correct? Yes, sir. Next, on the other side there is carbon and carbon. अब प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये है that the atomic numbers are clashing. ऐसे केसेस में क्या करना है? कार्बन का एक बॉन्ड तो डबल बॉन्ड पे है, बाकी जो 3 वैलेंसी है उसका एटम्स आपको देखना है. मतलब दिस इथाइल ग्रुप कैन आई राइट एज CHH विद अ CH3? चलेगा क्या? Yes, sir. उसका एक बॉन्ड तो डबल बॉन्डेड कार्बन पे है, बाकी 3 बॉन्ड्स कौन से एटम को अटैच है देखो जरा. H, H, and Me. H एंड एटम पूछा मैंने, ग्रुप नहीं, सिर्फ एटम. Carbon. कार्बन. तो इसका एक सेट बनाना है CHH. वैसे ही COH के लिए बनाओ. कार्बन इज बॉन्डेड टू डबल बॉन्डेड O एंड OH. तो एक बॉन्ड तो डबल बॉन्ड पे गया, बाकी 3 किसको अटैच्ड है? O. O. अब डबल बॉन्ड O मतलब आप कंसिडर करो 2 ऑक्सीजन को अटैच्ड है, एंड सिंगल बॉन्ड O मतलब वापस ऑक्सीजन को अटैच्ड है. तो इसका एक सेट बन जाता है डबल बॉन्ड O का डबल O एंड सिंगल बॉन्ड O का सिंगल O. तो O O O. अब बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर्स इन दोनों में विच इज अ बिगेस्ट सेट? O, O, O. O O O. समझा? This will be assigned a priority over the ethyl, and now one ones are on the same side, it will be Z form again. समझा? अच्छा, मान लो मेरे पास साइनाइड और अल्डिहाइड क्लैश होता है, तो what will be the 3 valences of carbon you will put over here in the set? N, N, N. करेक्ट. ट्रिपल बॉन्ड N को ट्रिपल N बोलने का. और यहाँ पर O, O. OOH. कौन बड़ा है? N, N, N. क्योंकि इसका 21 हो जाएगा और इसका 17 होता है, तो साइनाइड विल गेन द प्रायोरिटी. अंडरस्टूड?
बोलो. Yes, sir. That's it. With this in and out, जो भी geometric isomerism के लिए लगता है, that synopsis I have covered in maximum detail as required. अब let's test your grasp. First question given on page 25. Which of the following will show geometric isomerism? एक एक करके example I am writing. You say yes or no with a reason. First one, C2H5Br. No, No, because it is. it's an alkene. Alkene. It's an alkane. It's a saturated compound. No, because it's a saturated compound and it will show conformation and not geometric isomerism. B, CH2COOH twice. CH2, COOH, COOH. Will it show or will it not? No. No. Because once again, this carbon is saturated, so the GI is not possible. C option is CHCOOH twice, which is CH with a COH, CH with a COH. And the two carbons are joined by a Double bond. tetravalency. देखो तो यहाँ पर double bond. Now this is an unsaturated dicarboxylic acid. Will it show GI? Yes. Yes. And इसके दो isomers we have famously named as malic and fumaric acid. तो answer है C. और D भी ruled out है because it's an alkane. So the GI is not possible. So that's the first category of question in which compounds दिए रहेंगे, वहां पर GI possible है या नहीं, वो आपको identify करना है. So as a whole, always remember GI will be possible in alkene, cycloalkane, oxime, and azo compounds with a condition that the double bonded atom or the single bonded in cycloalkane का substituent should be different on either side. Next, which of the following alkenes has the Z configuration of its double bond? Now, सबसे पहले, if you look at this alkene, what observation can you make? Terminal alkene. It's a terminal alkene. And terminal alkene GI बताता है क्या? No. No. मतलब ये ऑप्शन तो वैसे ही रोल्ड आउट है. और कोई ऑप्शन रोल आउट कर सकते हो? Any other option can you rule out? D. 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 क्योंकि D भी टर्मिनल अल्कीन है. ठीक है, तो B और C में से आइडेंटिफाई करना है. अब B में to this double bonded carbon you can see the substituent. What is this? Ethyl. Ethyl. This one, Ethyl. this one, Ethyl. and this overall Third butyl. third butyl. So if I just rewrite it as C double bond C with ethyl, methyl, and methyl and third butyl. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर सिस एंड ट्रांस हम असाइन नहीं कर पाएंगे बिकॉज ये दो ग्रुप्स जो है एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं. बराबर. तो इसके लिए वी विल हैव अ बेटर नॉमेनक्लेचर दैट इज EZ. और EZ के रूल्स के हिसाब से एज पर द एटॉमिक नंबर यू असाइन द प्रायोरिटीज. So ethyl versus methyl, which will have a priority? Ethyl. Ethyl because इसका सेट बनेगा
कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन, करेक्ट, एंड इसका सेट बनेगा ट्रिपल एच. डू यू अग्री? Yes, so. सिमिलरली यहाँ पर ट्रिपल एच बनेगा और टर्शियरी वाले ग्रुप में द सेट विल बी ऑफ ट्रिपल कार्बन, and triple carbon gains a priority, so this will be 1 and this will be 2. Now 1 1's on the opposite side, this will be a E form, correct. Yes, so. और उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में ऐसे ही जब आप अरेंज करके आइडेंटिफाई करोगे प्रायोरिटी के हिसाब से, दिस इज ऑब्जर्व टू बी अ जेड फॉर्म. एंड डी ऑप्शन तो एज इट इज मैंने रूल आउट कर दिया था, तो डी ऑप्शन में टर्मिनल अल्कीन होने की वजह से इट विल नॉट हैव द ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म ओनली पॉसिबल. ठीक है, नीचे वाला पार्ट जो बॉटम पे दिया है वो आप इग्नोर कर सकते हो. वहां पर मैंने बल्कि ग्रुप्स के हिसाब से जस्ट समझने के लिए लिखा है, बट एक्चुअली वहां पर जीआई पॉसिबल नहीं होगा. यू कैन जस्ट कैंसल ऑफ द बॉटम पार्ट. खाली आंसर में सी जो लिखा है उसका जेड फॉर्म यू कैन अंडरस्टैंड. बाकी इसका ई फॉर्म लिखना है तो यू कैन जस्ट मेक अ नोट अलोंग साइड. समझा? Yes, so. Okay. Third question is important. Which show geometric isomerism? Now, without looking at the answer, looking at the options, what options can you rule out? C. C, because Same substituent. same substituents. Very good. Anything else? A. A. Why? The middle carbon has no substituents. Middle carbon has no substituents. Okay. Anything else? D because it's saturated. Which one? D. D. So saturated cycloalkane में GI possible नहीं होता. GI is possible in cycloalkane, right? But what was the condition for that? The group should be an adjacent carbon. The group should be on adjacent carbon and each carbon should have substituents which are Different. different. तो यहाँ पर आप देखोगे तो Me डाई सब्स्टिट्यूटेड भले है लेकिन the substituents on the same carbon atom are same. तो जब ये सेम होगा तो चाहे उसको above the plane मानो या below the plane मानो, is it going to make any difference? No. No. मतलब C definitely ruled out है because the substituents are same. So C is ruled out because the substituents are same and even D is ruled out because the substituents are same. अब बात करते हैं इन दो compounds की. When one carbon have two double bonds, what are these compounds called? Alene. Allenes or cumulated dienes, also called cumulines. Cumulines, allenes और cumulated dienes, ये सब एक ही है. अब यहाँ पर though the middle carbon doesn't have any substituent, और टर्मिनल कार्बन पे तो है, तो अगर एज अ होल मॉलिक्यूल प्लेनार हो जाता है तो इट कैन हैव द जीआई पॉसिबल. अब इसका प्लेनारिटी समझने के लिए बहुत सिंपल सा हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, ध्यान देना. इट्स वेरी सिंपल. व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मिडल कार्बन? SP. sp. सो नाउ कार्बन के चार ऑर्बिटल्स 2s 2px 2py and 2pz में से s and p are involved in the hybridization. So let's say s and the px are involved.
So the py and pz will remain unhybridized and will be responsible for which type Pi of bond? bonds. Pi bonds. ठीक है, अब ये वाला कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2. sp2। मतलब आउट ऑफ द 4 ऑर्बिटल्स 3 हाइब्रिडाइज होंगे एंड 1 विल बी लेटरली ओवरलैपिंग टू फॉर्म अ Pi bond. पाई बॉन्ड। तो लेट्स से मेरा यहाँ पर एस पी एक्स और पी वाई यूटिलाइज हो गया, तो द pz of this and the pz of this carbon will literally overlap to form this pi bond, correct? Yes, sir. अब यहाँ पर इस कार्बन से पाई बनने के लिए the p orbital on the y axis should be overlapped parallelly to form a pi bond, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके पास, करेक्ट? Yes, sir. मतलब यहाँ पर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द s and the 2p orbitals will be s p X and pz. x and pz. The py has to be present for a parallel overlap to form this pi bond. So now look at this carbon, the p orbital is lying on the z axis and the other terminal carbon ka p orbital is lying on the y axis. So is the molecule as a whole planar or non-planar? Non-planar. ये नॉन प्लेनार हो जाता है। So this cumulane with even number of double bonds, 2 4 8, there will be even number of double bonds होंगे 2 4 6 8, they all will be non planar। लेकिन जैसे ही odd number of double bonds होंगे, just look at the concept here, same funda, this double bonded carbon is what hybridized? sp. So let's say s and px यूटिलाइज हुआ, ये sp2 है तो s px और py, तो इसका pz एंड इसका pz लिटरली ओवरलैप हुआ टू फॉर्म अ पाई बॉन्ड, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, यहाँ पर भी sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो लेट्स से यहाँ पर s और px, अब इसका जो बचा py वो इस py से लिटरली ओवरलैप करेगा टू फॉर्म दिस पाई बॉन्ड, Yes, sir. ठीक है? तो ये py एंड py हो गया। अब यहाँ पर इस कार्बन का व्हाट शुड बी द हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट शुड बी द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ऑर्बिटल्स? इसका px चला गया, py चला गया, अब कौन सा बचा इसमें? pz. Z. तो दिस pz हैज टू ओवरलैप विद दिस pz, मतलब द इन्वॉल्वमेंट और द हाइब्रिडाइजेशन शुड बी ऑफ px py। Now look at the terminal atoms. The p orbital is on the z axis only, matlab now the molecule as a whole is Planar. planar. So it is as good as a double bonded carbon like this, बोल सकता हूँ? मतलब इसको श्रिंक करके मैं ऐसे लिखूं तो चलेगा कि नहीं चलेगा, बोलो? चलेगा. चलेगा। मतलब ये GI बताएगा, यानी a conclusion which is very simple now, cumulines में the number of double bonds could be odd or the number of double bonds could be even। odd होगा, odd होगा यानी 3 5 ऐसा, तो because of the planarity it shows GI. GI, एंड इवन में नॉन प्लेनार होने की वजह से सिमेट्री भी लॉस हो जाता है, इसीलिए इवन हैज अ टेंडेंसी टू शो द OI। यानी द मोमेंट यू लुक एट क्यूमुलेंस यू हैव टू जस्ट लुक एट द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। डबल बॉन्ड्स में ऑड शोज GI एंड इवन शोज OI। ऑड OI नहीं बताता, ऑड GI बताता है, वो भी फंडामेंटली मैंने एक्सप्लेन किया है आपको कि odd number of double bonds makes the molecule planar as good as similar to one double bonded carbon molecule, and the condition is these two substituents on the terminal position have to be
Different. different. अगर यहाँ A type हो गया तो despite of the planarity it will similar to the C option and in that case the GI won't be possible. तो ज्यादा दिमाग को त्रास नहीं देना है. क्यूमुलेंस में लुकिंग एट द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स ऑड है तो GI बताएगा, इवन है तो OI बताएगा. रीजन एक्सप्लेन किया है. नहीं भी समझा तो इतना याद रखो, ऑड GI बताता है और इवन OI बताता है. The entire explanation I have written on page 26. Understood? Yes or no? Yes, sir. Okay, the fourth and fifth question are related to the optical isomerism. So in the next session, I will complete the optical and come back to this two question to explain the concept. अभी के लिए with regards to GI, तीन टाइप के क्वेश्चंस जो मैंने सॉल्व किए हैं. आप खाली क्वेश्चन का टाइप समझ लो क्या आ सकता है. फर्स्ट इज GI का कंडीशन, किसमें पॉसिबल है किसमें नहीं. सेकेंड इज EZ कॉन्फ़िगरेशन का नॉमेनक्लेचर पूछा जा सकता है. एंड थर्ड इज क्यूमुलेंस के रिलेटेड कॉन्सेप्ट. फाइन. Yes, sir. Clear? Okay. So I'll stop here for today.